भलरे थिबो। तो आमे आमर थिला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रो आमे देखिबा वर्तमान जाय जहा पढिचे तार गोटे क्विक रिवीजन दरकार पड़ले करनबा। तो एटा होचे हमर लेक्चर नंबर 20। शुभम भलो अच्छी। शुभम, कैन यू प्लीज शेयर द लिंक among your friends and in telegram group? शुभम, प्रीवियस क्लास देखिन? अच्छा शुभम, प्रीवियस क्लास बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सहित रिलेट थिला। ठीक अच्छे, देखिन जदि देखिनबा परे previous class was related to electronegativity. Now this class is dedicated for other components like oxidizing character, reducing character, etc etc. तापर हमें डिटेल्स रे देखिबा। थैंक यू। थैंक यू शुभम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो हमें आज टिके क्विक रिवाइज करनबा। लेट्स हैव ए क्विक रिवीजन फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग रो जहां पढिचे तार गोटे क्विक रिवीजन कर देबा विथ इन 4 to 5 मिनिट्स। तापर हमें हमरो पढिबा। ठीक है। सो फास्ट हमरो थिला लावोसियर क्लासिफिकेशन। लावोसियर पर डोबेरिन्स, डोबेरिन्स पर आस्तिला तमरो केकुले, केकुले पर डी चेनकोट्री, जी चेनकोट्री न्यूलैंड्स, फर्दर लदरमेयर, मेंडेलीव होची मेन पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल 7 8 कॉलम्स माने 8 ग्रुप 7 रोज थिला। फर्दर एलिमेंट्स गुडा केमने क्लासिफाई करा हितला जानिचे हमें। एंड देन वी हैव वेंट फॉर द modern periodic table. Modern periodic table, sorry, these are the some important features of Mendeleev periodic table, and these are the demerits. Modern periodic table was given by Henry Moseley in 1913. According to him, the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic mass. Then is your Charles Dunn's periodic classification, in which he placed the he placed the F block in between S and D. S and D. He placed the F block in between S and D. Good morning, Rashmiranjan. Then long form, which is the important part. Long form periodic table. It was given by Borbori. And according to his, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number as well as the electronic configuration. Okay. Then we went for the different features of modern L form, long form periodic table. Long form periodic table तो हमें किसी discuss करते ले which element, which group is known as chalcogen, etc etc. What are the features of block? Okay, I'm not going in details regarding the features. तापर हमरा आसीबो Alpec nomenclature of the compounds having atomic number more than 100. So सेतिपा हमें letter use करछे nil uni bi triquadpent hex sept octane. सपोज मते करिवार अछि 505 ताले मु कोन लिखबी पेंटिनिल पेंटियम, दैट इज पीएनपी। अकॉर्डिंगली एगुडा का पढै छै। एटॉमिक साइज जो देखिबा टॉप टू बॉटम आसला एटॉमिक साइज इंक्रीज होची, लेफ्ट राइट गले एटॉमिक साइज डिक्रीज होची। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस ऑलरेडी हमें डिस्कस कर छाचे। सो जो जेम से मानकर रेडियस डिफरेंस देखिबा, सॉरी रेडियस रो ऑर्डर देखिबा। देन वैन डर वाल रेडियस इज द हाईएस्ट, देन अनायनिक, देन एटॉमिक, देन मेटालिक, कैटायनिक, कोवेलेंट। तापर आछी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
ଆମର left right ଯାଏ top to bottom ଯାଏ increase ହବ. Ionization energy, this is the amount of energy required to remove the outermost electron of a gaseous atom, neutral gaseous atom, and accordingly it depends upon different factors: atomic size, effective nuclear charge, shielding effect or screening effect, half filled or full filled stability, penetration effect of orbitals. And then atomic, as atomic size increases, ionization energy decreases. As effective nuclear charge increases, it also increases. Further, more the shielding effect, less is the ionization energy. Half filled, full filled stability gives rise to ionization energy very high. Penetration effect also is s orbitals. The electrons present in s orbitals have more penetration effect as compared to PDF. Then along group, when we move from top to bottom, it increases due to increase in atomic size, but gradually when we move from left to right along period, it may increase or decrease. So it depends on different factors what we have already discussed. And if we remove the electrons one after another, then this ionization energy is known as your successive ionization energy. This is known as successive ionization energy. And further, we had discussed many questions related to ionization energy. Then was electron affinity or electron gain enthalpy. This is the amount of energy released when an extra electron is added to the gaseous atom. And it depends upon also similarly atomic size, nuclear charge, half filled or full filled stability. If we consider about atomic size, the atomic size, as the atomic size increases, the electron affinity generally decreases. And more the nuclear charge, more will be the electron affinity. Half filled and fulfilled, generally half filled and fulfilled uh, stable atoms do not generally accept electrons, so they have zero electron affinity. Then we have discussed when we move from top to bottom, it decreases, but when we move from left right, it may decrease or increase. But in case of chlorine family, that is halogen family, it is somehow found in a distinct manner. And if you see that chlorine has the highest among chlorine, bromine, iodine, although it is smaller size, it has a larger size than fluorine. So we had already discussed that in case of fluorine, it has compact structure, compact nature. That's why the electrons feels more repulsion as compared to attraction. That's why your these elements, that is your fluorine, has less electron affinity as compared to chlorine. And when we move from left right, it poses the order that lithium, then beryllium, it decreases, boron, carbon increases, nitrogen again decreases, further nitrogen to oxygen increases, oxygen to fluorine increases, and at neon it becomes zero or decreases. So this is the trend. And when we add one by one electrons, this energy released are known as successive electron affinity. We have discussed some questions related to successive electron affinity. Then we have discussed in the last class, that is what is electronegativity. Remember, whenever you are applying electronegativity, then you are considering it as a covalent bond. So in case of a covalent bond, the shared pair of electrons generally get attracted towards one atom, bonded atom. This is known as your electronegativity, this property, and it is represented by this arrow mark. And when we move from top to bottom along groups, the electronegativity decreases, but when we move from left right, it increases. Most electronegative element in the periodic table is fluorine, and least is one is francium. Different scales are there: Mulliken, Alfred Rocho, and Pauling scale. First one is your Mulliken scale. Mulliken scale says that IE plus EA by 2. Okay, and Alfred Roche's scale says that En is equal to this one, 0.359 multiplied by Z star divided by R square plus 0.744, and Z star is your effective nuclear charge, and this rho is equal to shielding effect. Pauling scale says that del E, that is the difference in energy between A and B, is equal to the binding energy of AB molecule minus half into binding energy of AA molecule plus binding energy of BB molecule. Okay, and del E is known as your difference in energy. Further, electronegativity difference between A and B, that is
xa minus xb is equal to 0.208 multiplied by daily in kilocalorie, 0.102 multiplied by root over of daily in kilojoule. And remember, Xa is the electronegativity of atom A and Xb is the electronegativity of atom B. So we had completed up to electronegativity. Next we will go for the sixth periodic property. The sixth periodic property was metallic character, right? So sixth periodic property is metallic character. I think this part may be completed by today. This might be the last class of this chapter. Metallic character. This might be the last class of this chapter. Then we will go for next chapter on behavior demand. Metallic character देखिबा. Metallic character जदि हम देखिबा metal पिला माने metal माने कोन ना तार किछि किछि प्रॉपर्टी रहिछि. सेही प्रॉपर्टी जेते बेले से मानिबा ताको हम कहबा metallic property. ठीक अछि. कोन कोन से प्रॉपर्टी. सो आम लिखिदेवा जे कौन कौन प्रॉपर्टी ना तुम्हारा डक्टिलिटी मेलिएबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आम लिख परियो द प्रॉपर्टी बाय virtue of which the property by virtue of which the property by virtue of which an element shows the following characters following characters is known as metallic property. Yes, शुभम बहुत गुटे फॉर्मूला रही सत कि से फॉर्मूला गुटार बेसिकली एत यूज ना कि जेई नीट एग्जाम रे टिके यूज अच्छी आम एग्जाम एत यूज ना तो केवल फास्ट तुम्हें मन रखिव तुम दैट इज योर मूलिकेन स्केल दैट इज आई प्लस ए बाय 2 एटा यथेष्ट कौन कौन से प्रॉपर्टी गुड़ाक रही गोटे हूँ तुम जब देखा लस्टर औज्ज्वल्यता. Second property is your malleability, नमनीयता. Malleability, I think spelling भूल अछि. Malleability. Let me check the spelling. Then ductility माने तन्यता जोड़ा हमें गोटे लाइन रे कन्वर्ट कर परिबा. We can convert it into a line. Luster माने तुमरा शाइनिंग करिवो. MA, sorry, it will be MA, right? Malleability will be MA. Malleability, ductility, yes, more ME actually. Malleability, ductility. Further, conductivity that may be your conductivity, electrical conductivity as well as heat conductivity. So both electrical as well as heat, thermal, electrical and thermal. This jaga conductivity. Thermal माने heat conduct करिवो, electrical माने तुम्हारा electricity conduct करिवो. आउ कोन hard and sonorous शब्द क्रिएट करिवो. Hard and sonorous. आज ही क्लास टा सार दो. आज चैप्टर को सार दो वाली भाबुची. सरजिव अल्प सेक्शन ना एटा सरजिव. एई सब प्रॉपर्टी हार्ड एंड सोनोरस. आउ कोन प्रॉपर्टी रही मेटालिक प्रॉपर्टी. लस्टर, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी दैट इज इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी. हार्ड एंड सोनोरस. हार्ड रहिबो. ठीक अछि. सॉफ्ट अछि, हार्ड भी अछि, बट हार्ड जनरली हम देखू. बस these are the things. आउ गोटे सोनोरस माने शब्द क्रिएट करिवो. आउ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तो मोले पाउनी.
High melting point and boiling point. Yes. High melting point and boiling point. Melting point of boiling point basically high as compared to your covalent and coordinate. Yes, शुभम atomic radius jaha atomic radius taha radius ର plural form होची atomic radius. Red eye, red eye, red eye. It will be uttered as red eye, pronounced as red eye. तो यार वेरिएशन देखिबा ठीक अछि मेटालिक प्रॉपर्टी रो वेरिएशन जदि हम देखिबा लेफ्ट टू राइट जदि तुमे जीवो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हे जीवो तो आम जो देखा when we move from left to right when we move from left to right along period metallic property decreases ଆଉ ଏମିତି decrease ହବ ଶେଷରେ ସବୁ ଗୁଡାକ non metal ହିଁ ପାଇବ for example ମନରେ କହିବି ଏବେ beryllium boron lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine नियन ठीक अछि सो एई दीटा बेसिकली लिथियम बेरिलियम बोरॉन एगुडाक तुमरो सॉरी लिथियम बेरिलियम होची तुमरो मेटल lithium beryllium होची metal right these two are metals but boron is a metalloid carbon nitrogen oxygen fluorine these are non metals so देख पारछो metal character कमी कमी पूरा non metal हे जीवो similarly हमें जीवा when we move from top to bottom along group when we move from top to bottom along एटा period लिखे बोले along period along group metallic character will be top to bottom जदि आसीबा metallic character increases तो जदि हम देखिबा गोटे गोटे एलिमेंट खास करके हम जदि देखिबा बोरॉन फैमिली बोरॉन रे बोरॉन एल्युमिनियम गालियम इंडियम थालियम राइट इवन कार्बन फैमिली भी देखिले इतना बोरॉन होची गोटे नहीं बोरॉन को देखिले हबनी बोरॉन देखिबानी रो बोरॉन नो बोरॉन देखिले हां बोरॉन ही ठीक थिला रे पूरा कुडी घोड़े की रही शुभम बोरॉन एल्युमिनियम गालियम इंडियम थालियम बोरॉन पिले कौन गोटे नॉन मेटल एल्युमिनियम गोटे सॉरी बोरॉन गोटे metalloid boron is a metalloid and aluminum is a metal and gallium indium thallium all three are metals सेमती कार्बन फैमिली रे कार्बन होची गोटे नॉन मेटल सिलिकॉन होची मेटालॉइड कार्बन सिलिकॉन जर्मानियम होची मेटालॉइड टीन होची मेटल लेड होची मेटल फ्लोरोवियम होची भी मेटल तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी हमर कोन होची टॉप टू बॉटम आसले इंक्रीज होची लेफ्ट राइट गले डिक्रीज होची ये गला हमर मेटालिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉपर्टी जीवा पीरियोडिक ट्रेंड 7 number periodic trend is reducing character or acidic property reducing character or acidic property पिलाने आगे हमें जानिबा दरकार रिडक्शन कोन रिड्यूसिंग कैरेक्टर कोन रिडक्शन कोन और रिड्यूसिंग कैरेक्टर कोन निहाती भाबे जानिबा को पड़ियो so what is reducing character and what is reduction yes previous trend was satisfied for everything
आगो ट्रेन टा सब गुडा साटिस्फाई हम दैट इज मेटालिक प्रॉपर्टी सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जब हम देखा एसिडिक कैरेक्टर आगे आम रिडक्शन कौन ऑक्सीडेशन कौन मन रख जो आम इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गुड मॉर्निंग राजेश राजेश जाइथिलो कुआडे ऑक्सीडेशन and gain of electron is known as reduction gain of electron is known as reduction तो जे इलेक्ट्रॉन लॉस करे जे निजे इलेक्ट्रॉन लॉस करे ताको कौन कह जीवो जे निजे इलेक्ट्रॉन लॉस करे जे इलेक्ट्रॉन लॉस करे बारे हेल्प करे ताको कह जीवो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर so helps in oxidation माने इलेक्ट्रॉन लॉस करेबारे हेल्प करे ताले सेल्फ निजे कौन हो जाए सेल्फ रिडक्शन ताको कौन कह जीवो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इवन किछि किछि जगह रे याकू बेसिक कैरेक्टर भी अल्कालाइन कैरेक्टर भी कह जाए किंतु जे हेल्प्स इन रिडक्शन जे रिडक्शन करिबारे हेल्प करे आ कौन निजे सेल्फ कौन हो जाए निजे ऑक्सीडेशन हो जाए निजर किंतु ऑक्सीडेशन हो जाए अन्य मानू किंतु रिड्यूस करे जे ताको हम कौन कहबा रिड्यूसिंग एजेंट सुभाषिष गुड मॉर्निंग सुभाषिष आसी नथिलो काहेकि अच्छा हो ठीक अछि सुभाषिष नेक्स्ट टाइम तो आसीओ क्लास को ओके बुझियलानी शुभम बुझौची एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट मन रख लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होची ऑक्सीडेशन सपोज मु मन रे कहबी NaOH प्लस HCl ठीक अछि NaOH प्लस HCl नहीं NaOH प्लस HCl नले एडरे बुझेबो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ओडे नबा रिड्यूसिंग कैरेक्टर okay when for balance तो डिफिकल्ट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर HCl plus O2 suppose ठीक है HCl plus O2 कौन हम ना H2O plus Cl2 HCl plus O2 कौन दबो H2O plus Cl2 HCl O2 रे पास करेंगे तो बैलेंस कले 2HCl plus O2 gives rise to sorry 4HCl plus 2O2 gives rise to 2H2O plus Cl2 2Cl2 this is the balance reaction देखो एटी जदि आम कहबा ऑक्सीजन निजे कौन होची एठे हेले हाइड्रोजन रो कौन होची हाइड्रोजन रो जदि देखिबा हाइड्रोजन रो एठे खास करके हाइड्रोजन रो जेंति सेंति इलेक्ट्रॉनिक स्टेट रोच कारण एपड़े H प्लस एपड़े भी H प्लस ओ H माइनस हो जाउची ठीक अछि किंतु क्लोरीन रो अवस्था एठे क्लोरीन माइनस थिला एपड़ू किन पळे आसले क्लोरीन न्यूट्रल हे गेला तो क्लोरीन माइनस क्लोरीन हला माने इलेक्ट्रॉन लॉस कला पिला माने ध्यान देकी देखो क्लोरीन माइनस क्लोरीन हला कारण Cl2 हबा गोले इलेक्ट्रॉन लॉस करिया पड़ो सो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कला के क्लोरीन कारण क्लोरीन माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अच्छा सुभाषिष ठीक अछि मु आज उठिला आडू 5टा हलानी सेति मोर किंतु क्लास देरी हलानी 6टा 20 हलानी आउडी अर्ली उठथिले टिके क्लास उडा भल लगे काली पूरा एग्जैक्ट टाइम रे हेतिला काई कहलो काली क्लास मोर एग्जैक्ट टाइम हबार मेन रीजन हला काली उठिथिली 3:30 बेले मॉर्निंग रे तो उठिबा टाइम पर डिपेंड करछि केतोले क्लास होचे बॉडी जे सपोर्ट करियो से अनुसार उठछि हो तो क्लोरीन माइनस टा कोथरे कन्वर्ट हला क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन ध्यान देकी देखो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन रे जेहेतु कन्वर्ट हला इलेक्ट्रॉन लॉस कला तो एइडा होछि की प्रकार रिएक्शन एडा होछि ऑक्सीडेशन एडा होछि की प्रकार रिएक्शन ऑक्सीडेशन किंतु जदि हमें O2 रु H2O कथा कहबा O2 रु H2O कथा अच्छा ऑक्सीजन रो एडी जो देखिबा ऑक्सीजन रा एडी न्यूट्रल थिला कोन चार्ज थिला कि सो एडी चार्ज ऑफ ऑक्सीजन केते 0 चार्ज ऑफ O होची 0 माने एडा होची O न्यूट्रल थिला किंतु एडा ऑक्सीजन रो चार्ज हेजिबो O2 माइनस ऑक्सीजन रो चार्ज हेजिबो O2 माइनस ताले ऑक्सीजन निजे कोन कला इलेक्ट्रॉन गेन कला तो ये कोन कला सेल्फ रिडक्शन हला सेल्फ रिडक्शन हबारु ये कोन कला ऑक्सीडेशन रे हेल्प कला
କିଏ oxidation helps in oxidation କିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଲ୍ପ କଲା କୋଉଥିରେ ଅକ୍ସିଡେସନ ରେ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କଣ ହେଲା ରିଡକ୍ସନ ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରଦୀପ ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପଢେଇ ଆଗକୁ ଯାଏ ସିଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକ ସେମିତି ନିଜେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରେ ସିଏ ହଉଛି କଣ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ତ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ reducing agent is it clear तो ऑक्सीजन को ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା reducing agent ବୁଝିହେଲା ऑक्सीजन को reducing agent similar fashion ରେ reduction ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଟା totally overall reaction ଟା ହଉଛି oxidation similarly reaction ଦେଖିବା reduction को ଯିଏ help କରିବ ସିଏ ହଉଛି reducing agent ଏଟା ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ସରି ଏଟା ऑक्सीजन ଟା ହଉଛି oxidizing agent ମୁଁ reducing agent लिखिଲି भूल लिखिली କାରଣ self reduction and helps in oxidation तार उल्टा जहाँ हम तार उल्टा हम एजेंट तो रिडक्शन हेले सी जदि निजे रिडक्शन होची ताले कौन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी जदि निजे ऑक्सीडेशन होची ता कौन कह जीवो रिड्यूसिंग एजेंट एटसेट्रा एटसेट्रा बुझिएला ताले हमें जीवा रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर खास कर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बाय एसिडिक प्रॉपर्टी तो हम कौन कहबा द property by virtue of which the property by virtue of which the property by virtue of which कौन होगा an atom the property by virtue of which an element कौन करियो ना gains electron the property by virtue of which an element helps माने reduce हो जाए तो an element helps in reduction the property by virtue of which an element helps in reduction that is your gain of electrons is known as reducing character ताको हमें कौन कहबा reducing character तो जो प्रॉपर्टी बा जो कैरेक्टर जोगु गोटे एलिमेंट कौन करे इलेक्ट्रॉन गेन करि थाए ताको हमें की कैरेक्टर कहबा reducing character बुझियला द प्रॉपर्टी बाय virtue of which an element helps in reduction or gain that is gain of electrons is known as reducing character तो reducing character of variation जदि हम देखिबा reducing character it is also known as your acidic character भी reducing character को किसी किसी जगह रे acidic character कह जाय acidic character माने कोन acidic character माने तीनटा डेफिनेशन अछि एसिड रो तीनटा डेफिनेशन अछि मन रखता एसिड माने जे लॉस ऑफ H+ आयन जे H+ आयन दे परिबो किंबा जे कोन कर परिबो abstract proton जे प्रोटॉन abstract सॉरी जे abstract कोन कर परिबो लोन पेयर को जे एक्सट्रैक्ट बा एक्सेप्ट कर परिबो सो लोन पेयर को जे एक्सेप्ट कर परिबो सी होची एसिड बा इलेक्ट्रॉन को जे एक्सेप्ट कर परिबो एक्सेप्ट लोन पेयर होची एसिड सिमिलरली बेस कोन बेस तीनटा जिंस ना लॉस ऑफ OH- आयन OH- लॉस कर परिबो एइदर किंबा कोन कर परिबो ना एक्सेप्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर परिबो एक्सेप्ट H+ आयन किंबा तुम्हारा डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर पारे सी हबो हमर कोन ताक कहबा बेस बुझियला एसिड एंड बेस तो वेरिएशन जदि हम देखिबा लेफ्ट राइट जदि हम मूव करिबा कोन हबो when we move from left right generally acidic character decreases acidic character is somehow related to metallic character so acidic character is somehow related to metallic character so when we move from left right it decreases and when we move from top to bottom it increases when we move from top to bottom along group
आज ये पाठटा सारीदेवा पिला माने भाबुची इट इंक्रीजेस आ 5-10 मिनिट एक्स्ट्रा पछे पढ़े देबी पाठटा सारीदेवा सो टॉप टू बॉटम आसले ये इंक्रीज हबो आ कोन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along period when you move from left to right along period it decreases so period रे गले ये कौन है जो डिक्रीज है जो लेफ्ट टू राइट गले ये कौन है जो डिक्रीज हबो आउ टॉप टू बॉटम आसिले ये कौन हबो इंक्रीज हबो बस ये गला हमर कौन सेवेंथ प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग कैरेक्टर 8 नंबर प्रॉपर्टी नेक्स्ट जीवा ग्रुप रे नोट को शेयर करिवे तम नोट कर न ग्रुप रे नोट शेयर करिवे हो ठीक अछि रिड्यूसिंग कैरेक्टर नेक्स्ट आछि हमर रिड्यूसिंग कैरेक्टर रिड्यूसिंग कैरेक्टर को हमें कौन कहबा एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक सॉरी रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो अभी पढ़िले ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ओ सॉरी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी बा अल्कालाइन प्रॉपर्टी अल्कालाइन बा बेसिक प्रॉपर्टी alkaline or basic property. So basic property is same fashion. Now the property by virtue of which an element helps in oxidation is known as oxidizing character. नौ नंबर आसे हमारा oxidation state 10 number inert pair effect. The property by virtue of which an element the property by virtue of which an element कौन करिवो helps in oxidation oxidation रे help करिवो थैंक यू शुभम थैंक यू सब गुड़ाक क्लास रो नोट कर बहुत बढ़िया हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन सेल्फ कौन हो जाए रिडक्शन निजे रिडक्शन हो जाए सेल्फ किंतु रिडक्शन हो जाए इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर तो निजे निजे ऑक्सीडेशन निजे रिडक्शन है कि अन्य मान को ऑक्सीडेशन करे थाए कौन का जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर 19-20 किंतु 19-20 नंबर लेक्चर नोट करी ना नोट करी नबो देखो ए नोट रे किछ एक्स्ट्रा मैं पढ़ी छि मु तापर हम जो देखिबा वेरिएशन 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 देखिबा टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर रो इंक्रीज होतला एडा डिक्रीज हो so it amaro when we move from top to bottom when we move from top to bottom along group alkaline property or we can say oxidizing character decreases so oxidizing character decrease habo jetole ame top to bottom move koruchu when we move from left to right along period increases बस मन रहा तो आर उल्टाटा तारो ना oxidizing character increases यहाँ पर मु पढ़ेबी पिला माने को चैप्टर को ए चैप्टर सरला पर को चैप्टर पढ़िबा
रेडक्स तो गला थर हेची आमे पढ़िबा केमिकल इक्विलिब्रिया कोन कहउछ यूट्यूब रो कथा कहउछ मु यस केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़िबा तमे माने आल्केन आल्किन आल्काइन बेंजीन ए सब पाठ गुडा को पाई जीवो यूट्यूब रे हमर अछि जो माने एडवांसली पढ़िया को चाहछ ठीक अछि यूट्यूब रे ऑलरेडी अवेलेबल अछि जो माने भी चाहछ लाइक कार एग्जाम रहिछि कोन रहिछि तो पढ़िया को चाहछ माने आल्किन आल्काइन आल्केन पढ़ि परिबो यूट्यूब रे अवेलेबल प्रीवियस ईयर ऑक्सीडेशन स्टेट जदि हम देखिबा ऑक्सीडेशन स्टेट कोन and the total charge carried out by an atom the total charge carried out by an atom the total charge carried out by an atom in a molecule or ion molecule किंबा ion रे total charge केते रहिछि is known as its oxidation character is known as कौन कह ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल केते चार्ज रही ठीक अच्छे टोटल केते चार्ज तुम कह सर केमती आम जान टोटल चार्ज ताप फर्माट अच्छी फर्मूला अच्छी आउटा बहुत इंपोर्टाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट रो आम रेडॉक्स को रिलेट कर क्वाइट इंपोर्टेंट तो एटा निहाती दरकार ऑक्सीडेशन स्टेट केमती बाहर करवा सपोज मते मैंगानीज रो बाहर करिवार अछि ऑक्सीडेशन नंबर तो क्वेश्चन अछि लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन कैरेक्टर ऑफ बा ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON manganese chromium then sulfur in the following compounds कौन कौन अच्छी गोटे अच्छी KMnO4 तापर आसी K2Cr2O7 तापर आसी H2SO4 अखिल पचारे सर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जिवो राइट टॉप टू बॉटम जो जेम जिवा इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस हो जिवो ठीक कथा अखिल तो मु मन रखबी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तो इलेक्ट्रॉन जते इजीली लॉस हबो तमन तार सेल्फ रिडक्शन से भल हम सेटा कौन हम सेल्फ रिडक्शन भल हम टॉप टू बॉटम जदि आम आसवा सेल्फ रिडक्शन भल हम टॉप टू बॉटम आसले सेल्फ रिडक्शन विल बी मोर कारण इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हम सेल्फ रिडक्शन माने कौन हम ताले सेल्फ रिडक्शन माने ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होची ना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस रिड्यूसिंग कैरेक्टर तार उल्टा हम एमती एमती रिड्यूसिंग कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अच्छी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कॉन्सेप्ट भी अच्छी सो इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेतिपई आकु एग्जैक्टली रखालानी सपोज मु मन रखे कहबी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रॉन ऐड करा होछ सबथरे इलेक्ट्रॉन ऐड कले ये कौन हम क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस तो माने कौन हम ना सेल्फ रिडक्शन है सेल्फ रिडक्शन का माने माने ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर
तो जदि हम देखिबा टॉप टू बॉटम जनरली बहुत इजी हो जाए, प्रथम बहुत डिफिकल्ट हुए तापर इजी हो जाए। इजी हो जाए माने टॉप टू बॉटम जदि हम जिबा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होची। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सेल्फ रिडक्शन माने ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या गोटे थिला सेल्फ ऑक्सीडेशन माने रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो टॉप टू बॉटम आसिले ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होची और रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होची नहीं तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हुए एंड टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज हुए। गोटे मिनिट लेट मी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा ये गला तापरे मु सोडियम न कथा नेबी। लिथियम सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कला, सो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, तो इजिली ये गला। तो टॉप टू बॉटम जो आम आसले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माने सेल्फ ऑक्सीडेशन बट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सेल्फ ऑक्सीडेशन यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो देखिए टॉप टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। Self oxidation that is reducing character. Acidic character increases not decreases like that. Acidic character decreases down the group. ताले self oxidation माने reducing character, self oxidation माने reducing character। so top to bottom आसिले हमारा reducing character कौन हुए? बेसिकली इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो गले रिड्यूसिंग कैरेक्टर अधिक हम। so top to bottom आसिले एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हबो, easily electron loss हबो, so reducing character will increase top to bottom आसिले। ताले ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आर उल्टा हबो, so टॉप टू बॉटम आसिले ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कम हबो, कारण इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कला सेल्फ ऑक्सीडेशन माने रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हबो। यस इजीली लॉस हबो, लॉस हला माने सेल्फ ऑक्सीडेशन इजी हबो, सेल्फ ऑक्सीडेशन इजी हला माने रिड्यूसिंग कैरेक्टर अधिक हबो। मु टिके कंफ्यूज हो जाइतिली। दीप्तिश्री गुड मॉर्निंग। दीप्तिश्री तुम क्लास में आछि मो जानि जे 7 हेलानी 7:10 हेलानी। तो एठी हम जे देखिबा सेही फॉर्मेट रे रिड्यूसिंग कैरेक्टर आ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हला। तमे ए क्वेश्चन गुडा को तो ऑक्सीडेशन नंबर दीप्तिश्री तम पई भी एटा तो तमे माने जानिचो, तथापि तम मान पई एटा हेल्पफुल हबो हमकु ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करियर अछि। आ गोटे क्लास पिला माने मु नेबी काई ना एबे 12th रो क्लास रखिछि मु आ 11th रो क्लास करी नेबे 12th रो क्लास नेबी, तथापि ए गोटे मु देखो कहि दोछि के MnO4 पिला माने फर्स्ट के MnO4 रो ऑक्सीडेशन बाहर नंबर बाहर करबा कार मैंगनीज रो। तो पोटेशियम रो चार्ज मन रखता +1,
manganese ର plus x ଆଉ oxygen ର 4 into minus 2 जेहेतु एटा गोटे न्यूट्रल स्पेसीज तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 ताले 1 plus x minus 8 is equal to 0 और x minus 7 is equal to 0 और x is equal to 7 so manganese रो चार्ज एटी केते manganese रो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 ए चैप्टर सरले ही शेयर करी सुभाष न सरनु शेयर करी होनी so manganese रो ऑक्सीडेशन स्टेट होची +7 is it clear manganese has oxidation state of +7 ठीक अछि आउ थरे कहली हो देखो k रो चार्ज सबले +1 ऑक्सीजन रो चार्ज सबले -2 सिमिलरली k रो 1 ऑक्सीजन रो -2 एडे H रो 1 ऑक्सीजन रो -2 तो तमरो चार्ज गुडा को प्राय जानथियो पडियो k प्लस रे जाउची सबले k +1 तेनु +1 -2 एटा को सॉल्व करले 1 plus x minus 8 is equal to 0 by x minus 7 is equal to 0 so x is equal to +7 so oxidation state for manganese is +7 तम काम हला सिमिलर फैशन रे क्रोमियम और सल्फर रो बाहर करिवो सिमिलर फैशन रे क्रोमियम आउ सल्फर रो बाहर करिवो पिला मुने मु जोटा पढेली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर फॉर क्रोमियम रो 2x नबो यस क्रोमियम रो 2x नबो सिमिलर फैशन रे तमे माने कर परिबो आउ मु जो गुडा को पढेली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ताको भलो ध्यान देकी देखिबो किंतु ऑक्साइड हेले सल्फाइड हेले तार अलगा अलगा हे जाय ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑक्साइड रो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अलगा हे थाए सल्फाइड रो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर अलगा हे थाए हाइड्राइड रो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर so this was only for element oxidizing character और reducing character was only for elements yes बैलेंस अनुसार चार्ज बाहरी हो यू आर राइट अखिल ठीक अछि आज क्लास को एठी रखुची थैंक यू